So this is what we were discussing. We were seeing that day. This is the actually ultrastructure of the what? This is the ultrastructure of the muscle fibril या myofibril. तो अगर हम इसको देखेंगे, this is the ultrastructure of the myofibril. Okay, so of one myofibril. So especially highlighting the biochemistry of the different muscle bands. ठीक है, तो ये आपका जो अलग अलग मसल बैंड्स हैं उसके बायोकेमिस्ट्री को ये डायग्राम डिस्कस कर रहा है. तो बेसिकली वी विल डिस्कस दिस आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक्स, क्योंकि अगर आप बेसिक्स नहीं समझोगे तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा. ठीक है, सो इफ वी सी इन ए नटशेल, ओके, सो अगर हम नटशेल में देखेंगे, okay, so if you see in a nutshell, you will see this structure. So if you are seeing this structure, very easily you can find that they are striated. So these are light bands. Okay, so these are light bands and followed by dark bands, and which is again followed by light bands and so on. So okay, so light bands, dark bands, light bands, dark bands. So in collection हम इसको क्या बोलते हैं? So we are calling it striated या striped muscles. Hence this is the detail, okay, microscopic structure of the striated या striped muscles. Okay, तो इसीलिए now you know that why they are called as striated या striped muscles, because there are zones of light as well as dark bands. Now, when we compare these two drawings, we can easily see that the light bands are synonymous with what? The I bands, and the dark bands are synonymous with the A band. Okay, so light bands, dark bands, light bands.
So light bands synonymous with A bands. So we can just highlight this structure. Okay. And the dark bands are synonymous with the what? So the light band synonymous with I bands. I stands for isotropic actually. Isotropic bands, and A stands for anisotropic. Okay. So A stands for anisotropic bands. The H line, H zone, is also called Hansen's zone or Heller's line. Okay, so H zone is also called Hansen's zone, yeah, Heller's line. Okay, if we can take it here. Okay, and the Z line we will discuss with time. So easily you are seeing here. So this band, so this zigzag structure that we are seeing here. Okay, so here if you see, there is a zigzag structure. So this zigzag structure refers to the Z line. Okay, so this is called the Z line, and the architecture between two Z lines अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलेंगे? So this particular structure we will refer to as sarcomere. Okay, sarcomere. So this whole architecture between two Z lines is referred to as a sarcomere. Okay. So this is what we will draw first. Then we will come into this understanding. तब हमें इस बात को समझना आसान होगा. So now we'll go to our basic structure. So always remember here, so suppose हम लोग we make thin lines. Okay. So we'll start directly from here, and suppose we make lines. So these are your thin filaments. अगर हम इसको thin filaments ले रहे हैं, actually we will give some more space क्योंकि हमें बहुत सारा चीज बनाना है. We have to make a lot of things. So suppose these are thin filaments. Okay. So these are thin filaments. Okay. Now suppose these are thin filaments. Now what we will do? Now we will make a Z line. So we will make a Z line. तो अब हम सपोज इसको यहाँ काट रहे हैं. So this is one Z line and this is another Z line. ठीक है. अब we can make a smaller one here also. Okay. This is a Z line and this is another Z line. Clear? Now what we will do here, we will make, okay, the H zone. So
This is basically the H zone. Okay, and now we will make the thick filaments. तो सपोज हम लोग यहाँ से यहाँ बनाएंगे. So this is thick filaments. एंड अगर कोई भी अच्छा एग्जाम होगा, आप इसमें से गारंटेड क्वेश्चन पाएंगे, एंड ऑल्सो अ वेरी गुड चांस इन योर हाफ ईयरली और एनुअल. ओके, सो दीज आर एक्चुअली ए बैंड्स. तो उसी तरह से हम यहां भी बनाएंगे. ओके, सो विल जस्ट मेक इट हियर. And similarly, we will also make here. Okay, so these are your thick filaments. You can put one here also. Here and though. Now, actually, these thick filaments, they never, okay, decrease in size. तो ये आपका जो Z डिस्क को हम यहाँ ले आएंगे, क्योंकि they will not decrease in size. And थोड़ा सा elongate करेंगे इसको. And again here we will make those thin filaments. Okay, suppose we will make the thin filaments. So these are thin filaments and the thick filaments. So these are the thick filaments. So now this is the structure that we call a what? This is how your sarcomere will look like. So actually, which is a sarcomere? We will limit it to this area. So this particular area जो है, इसको हम एक sarcomere बोलेंगे. Okay, so you have so many sarcomeres here. Now, अब इधर क्या है? You will find one M line या middle line. ठीक है? So there will be a middle line. So which will pass from the top to bottom. So this is your M line or middle line. Now, तो ये M line है. So now we have different types of bands. So this is called the Z disc. Okay, this is the Z disc. Fine. So this is the Z. This is the M line. Okay, and this is again the Z. So these are the three lines, Z line and M line. Okay, now ये जो distance है, this distance from here to here, so this is called H zone. Okay, so this is called H zone. Fine, तो इसको हम लोग H zone बोलेंगे. Clear? Now
the distance from here to here. Okay, so the distance between here to here. So this is called the A band. Okay, so this is referred to as the A band. Now, if this distance from here to here, okay, so this is called the I band. Similarly, from here to here, so this is called the I band. Okay, so this is called I band, and similarly, this whole thing is called I band. Okay, so I band, A band, H zone, and I band. Now, this part here you are seeing what? Overlapping. है कि नहीं? So इधर से इधर आधा. So इधर से इधर you are seeing overlapping. Okay, from here to here. So this is called your U band, or simply you can call it zone of overlap. Okay, so this is called U band. Okay, U band, or simply we can use the terminology. Yeah, is also called the zone of overlap. Okay, so this is also referred to as zone of overlap, and similarly here also we can write zone of overlap. Okay, so this is your zone of overlap. Clear? So ये हमारा concept है, and this part is basically called the what? This part is basically called the sarco. Okay, so this part is basically referred to as the sarcomere. Okay, pura. So this whole part, if you take it here, is referred to as the sarcomere. पूरा यहाँ से यहाँ तक. Okay, this whole dibba is called a sarcomere. Now here we will have a spring-like structure, okay, which connects the M line. Okay, उसी तरह यहाँ भी होगा with the Z disc. Okay, so this is a spring-like structure. Actually, we will have to make it like a spring. तो हमें एक स्प्रिंग बनाना है. So suppose this is like this, and ये एक spring है. So here also you can make it like this and attach it. So इस तरह के spring, तो ये this will be there in every segment. Okay, I am just making one segment, but this will be there in every segment. Okay, so this is a structure जो कि हम लोग describe करेंगे. Now, what is this? So this is referred to as the primary filament, okay, or myosin
filament. Okay, so this is referred to as primary filament, or we can also refer it as what? Myosin filament. Understood? So ये आपका प्राइमरी फिलामेंट है एंड इट इज मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन, तो इसलिए हम इसको मायोसिन फिलामेंट भी बोल सकते हैं. तो वी कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट वन हियर आल्सो. Fine, so we can place one here and also one here. फाइन, सो ये आपका प्राइमरी फिलामेंट है या मायोसिन फिलामेंट है. ओके, नाउ अब इसको भी काय छोड़ देना. क्लियर? नाउ दिस लाइन, दिस डार्क लाइन, इसको हम लोग कहते हैं थिन फिलामेंट. ओके, सेकेंडरी filament or thin filament. So this is also referred to as secondary filament or thin filament. Fine. So we can write here, it's tension free, and also we'll put someone here. Okay, so that it is there on both the sides, and also here. तो ये एक चीज एक ही है. ओके, बस उसका लोकेशन अलग अलग है. So it is the same thing located at two different locations. So उस तरफ भी thin filament है and इस तरफ भी thin filament है. So that is called your secondary filament. Okay, क्योंकि ये बाद में आया. Myosin was produced first. Now, so this is called the Z line. Okay, तो इसको हम लोग Zwischen Schiebe line कहते हैं. Okay, this is also called Zwischen Schiebe line. Yeah, crosses membrane. Yeah, Dobby's line. Okay, this is also called Dobby's line. और simply हम इसको Z disc भी बोल सकते हैं. Okay, तो we'll put the same here also. Fine, तो इधर भी वही same चीज हम लिखेंगे. Now, what is this? So this is called midline. Okay, middle Schiebe line या M line. ओके, या सिंपली इसको हम लोग मिडिल लाइन भी कह सकते हैं. ठीक है. सो H zone is also called Hansen's zone. Okay, it is also called Hansen's zone या Heller's line. Okay, so you can call it Hansen's zone or Heller's line. Okay, तो ये प्योर मायोसिन है. नाउ अब ये जो मायोसिन है इसमें से क्रॉस ब्रिज निकलता है. ओके, तो फ्रॉम मायोसिन यू विल फाइंड क्रॉस ब्रिजेस. ओके, तो मैं आपको इधर बना दे रहा हूं. तो लेट मी यूज द पिंक ओनली. सो ये जो है तो यहां से जाएगा एंड ऐसे क्रॉस ब्रिजेस बनेगा जो आपका उसको पकड़ के रखेंगे. तो समथिंग लाइक दिस.
ओके, तो लाइक दिस, ओके, ये क्रॉस ब्रिजेस है, डबल हेड है ये, ओके, इट इज डबल हेड। फाइन, सो ये आपका क्रॉस ब्रिजेस है। फाइन, सो दिस लाइन is called something and these are called something. इसको हम लोग लेवलिंग कर देंगे। ओके, so this green line is also referred to as titin. Okay, titin protein. Okay, and we all know that it is the largest protein of the human body. Okay, so this is also titin. तो इसलिए there are 2 titins per sarcomere. हो गया? So this is the case, and ये जो है, these are the myosin cross bridges. Okay, so these are also referred to as myosin cross bridges. Now अगर हम देखेंगे ये जो पार्ट है, this part, so this part and this part, similarly this part and this part, it should be same in drawing actually, जो कि मेरे से हुआ नहीं है, तो ये साइज सेम होना चाहिए। तो इसको हम लोग I/2 बैंड बोलेंगे, है कि नहीं? एंड सिमिलरली इधर भी आएंगे तो I/2 बैंड होगा, यहाँ भी I/2 बैंड एंड I/2 बैंड। तो इसलिए हाफ आई उस तरफ है, हाफ आई इस तरफ है, ओके, हाफ आई इस तरफ है, हाफ आई उस तरफ है। तो ये जो देख रहे हो, सो दिस इज ए फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमियर। ओके, ये फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमियर है, एंड दिस इज ए रिलैक्स्ड सार्कोमियर। Now what is the difference? आप यहाँ क्या देख रहे हो? So there are क्या? No, क्या नहीं है? No H zone and no कौन सा बैंड? I band. Okay, so there is no H zone and there is no I band. So ये चीज आप देख रहे हो, तो इसलिए when do we say that the muscle has fully contracted? When there is no H zone and when there is no A band. So here we can make a thick arrow. So like this. Okay, तो ये कुछ ज्यादा ही thick हो गया. So we'll make it like this. And ये कब होगा? जब हम लोग कैल्शियम देंगे. Fine. So when the body provides calcium ions, okay, तो आपका contraction stimulate होता है. Okay. So now what is happening here? The Z discs are pulled towards the M line. And इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में दोनों तरफ का Z डिस्क आके M लाइन में जुड़ गया. Okay, so in case of permanent complete contraction, what will you find? ये जो है हमारा, ये इस तरफ आ रहे हैं during contraction, and they are both are approaching the M line. Okay, so they are approaching the M line, and in maximum contraction क्या होता है? Both the Z disc, okay, are approaching the M line, and there is no more space to move, है कि नहीं? यहाँ कोई और स्पेस नहीं है, इसीलिए आपका इसको हम लोग परमानेंट सार्कोमेर या
टोटली कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमियर बोलेंगे. Anything you need to ask, you can ask. Then we'll go for सर writing. मतलब बोलिए. सर मतलब ए बैंड लिमिट है ना सर? I don't get it. सर ए बैंड तक मैक्सिमम कंप्रेशन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं. Yes, means you cannot cross. अब तुम वहां बैठे हो तो तुमको दबा के हड्डी वड्डी तोड़ के घुस जाए ना क्या? So they are already there. How will you push it? So the maximum sir. contraction is A band या I band या H zone. A band. बोलो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ए बैंड होता है ना आई बैंड होता है या एच जोन होता है? A band. अगेन यू आर जस्ट डम्ब एज इडियट एज देयर. ओके, जब आपको मैं एक बार क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूं फिर भी आप में उतनी बदतमीजी है कि उसी पे टके रहते हो. अरे ए बैंड तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, तो देयर इज नो चेंज इन ए बैंड. जो ए बैंड ऊपर था वही ए बैंड नीचे है, वो तो टस का मस नहीं हुआ. अगर मैं एक गाइडलाइन बनाता हूं, इफ आई मेक अ गाइडलाइन, तो आप देखिए देयर इज नो चेंज. ओके, मैं इसलिए नहीं बनाता क्योंकि फिर दिखने लगेगा, फिर तुम सोचोगे कुछ और है. ये देखिए देयर इज नो चेंज. एक्चुअली ये मेरा ड्राइंग एरर है, इट शुड हैव बीन मोर हियर. सो दिस इज द कंसेप्ट. तो इसीलिए देयर इज द ए बैंड हैज नॉट चेंज्ड एट ऑल. सो दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम लिमिट. मींस यू कैन नॉट क्रॉस द ए बैंड. इसलिए कितना आप कंट्रैक्ट कर सकते हो आई बैंड, क्योंकि हाफ आई इधर है हाफ आई उधर है, तो इसलिए हम उसको आई बैंड बोलेंगे. एंड आपका एच जोन भी गायब हो जाता है, तो एच जोन से ज्यादा आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ओके, सो दिस इज द केस. चलिए, सो इफ यू वांट यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, अदरवाइज वी विल रिजॉइन टू राइट दिस डिटेल. तो दिस इज कॉल्ड द बायोकेमिस्ट्री ऑफ द मसल, एंड यही डिसाइड करेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली. तो इसलिए अगर ये आपको 2-3 महीना बाद याद नहीं रहेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन आप नहीं समझेंगे. चलिए बताइए. एंड ये दोबारा नहीं बनेगा, इसलिए आपको यही चीज याद रखना पड़ेगा. रिमेम्बर इट टिल दैट डे. तो इफ यू हैव यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस. सम टाइम आस्क दिस क्वेश्चंस. क्या है ना, आप लोग जब चुपचाप सुनते हो फिर बाद में ऐसे बकवास सा एक आंसर दे दोगे, है कि नहीं? सो इसलिए इफ यू डोंट आस्क द डाउट्स रिमेन एंड इट विल रिमेन विथ यू ओनली. सी कल आप मेरे